Just starting within What? 5 minutes after opening, within 5 to 10 minutes of opening the trade. That's it. Just Within trading 5 minutes you in just open the trade and within 5 minutes you can close the trade. yes, sir. 10 to 15 minutes close the trade. Okay. 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 50. I give you two strategy today for the 5 minute or 3 minute chart, and that is a scalping strategy. One strategy, the name is Scalp Pro. You use that tool. Okay. The name is Scalp Pro Oh, और Ovilix का है ये Scalp Pro. Please write down the indicator name. okay. The Scalp Pro is a basically a scalping strategy. It can be used in Bank Nifty or Nifty chart. Also some momentum stocks. Okay. And it give you exactly the buy and sell signal is very fast add mode. मतलब कि buy and then sell, then buy, then sell, then buy and then sell. So if you use this strategy into 3 minutes is very helpful. Okay. Just a minute, wait. Hello. हाँ हो गया. हाँ. हाँ. चलो कर. So just like that, if it's working, the Bank Nifty 3 minute chart will give you the buy and sell signal according to that tool. This name is Scalp Pro. So always it give you buy and sell signal at that manner, and you should exit at very least profit. You understand the least profit? Let's suppose I enter into the trade in sale trade. Last sale trade is 55,727. तो मोमेंट को अगर देखा जाए, इफ यू चेक आउट द मोमेंट, इट फॉल टिल 675. बट अगर मुझे यहाँ पे आई विल टेक 20 फ्रॉम this sale trade. That is called scalping. Scalping doesn't mean you take handsome market range. Scalping always profitable if you exit the trade in profitable only. Either you take 20 point, either you take 30 point, either you take 50 point. So I give you the minimum level of profit booking, that's called 20 point. Let's suppose you enter into the market from this tool through Bank Nifty 55,726. So my target is 55,706.06, and I exit the trade automatically because I plot the bid on to buy the trade on 55,706. तो मतलब साफ है कि स्कैल्पिंग में आप लोगों को जो ट्रेड लेना है उसमें मिनिमल प्रॉफिट होना चाहिए. 20 पॉइंट भी मिलते हैं तो बहुत है. 20-30 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत होते हैं. और वही स्कैल्प है. स्कैल्प इज डजेंट मीन कि आपके ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट आए. स्कैल्प मीन्स कि आपका प्रॉफिट टेबल ट्रेड्स हो, आपका छोटा प्रॉफिट हो, छोटा लॉस हो, नंबर ऑफ प्रॉफिट्स के ट्रेड्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ लॉस के ट्रेड कम हो, इट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग. तो कोई भी स्कैल्पर टूल व्हेन यू यूज्ड, if you use scalping tool, it means there is a multiple trade in a single day. Let's suppose when we talk about bank nifty today, and this is the 3 minute chart, and today is a 17, and the market start from
this time. Although you see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, almost 30 trade giving you in the single day. This is called scalping. But out of the 30 trade, how much trade is succeed? If you get 70% trade is succeed and you get 20 points in that and 30% fail with the 20-point lose, you definitely win in a single day. समझ गए मेरी बात को? लो भी 20 पॉइंट्स रहेगा. हाँ, एसएल भी 20 पॉइंट, प्रॉफिट भी 20 पॉइंट. और अगर आप ट्रेड में 70% की एक्यूरेसी ले आते हैं, 70% आपके ट्रेड सक्सेस होते हैं बाय और सेल में, तो आपका स्कैल्पर टूल ठीक काम कर रहा है. तो इफ यू वांट टू यूज दिस स्ट्रेटेजी, दिस डजंट मीन कि आपने एक ट्रेड ले लिया. लेट सपोज यू टेक बाय बट यू डोंट टेक सेल, यू टेक सेल बट यू डोंट टेक बाय, तो इट मीन्स यू आर नॉट अ स्कैल्पर. So there is a rule for scalping. You each and every trade from the your strategy should be execute. Mr. Reddy, are you understand? Mr. Reddy? Yes, sir. I understand, sir. Okay. What do you understand? We should not take a sell trade, and we should take sell trade, and we should not take buy trade. We should take both trades as it is given in the indicator. So that's why scalper job is very difficult. Scalper is just like a jobber. He take the opportunity and making the profit. और it doesn't mean उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार जहाँ मर्जी जाए. Scalper always do trade according to the tools. दोनों साइड ट्रेड लेगा, सारे ट्रेड लेगा. बट उसका स्ट्रेटजी विल वर्क above 70% accuracy. That means scalper is profitable. Okay, it today is a market after the movement it's going flat. बहुत रेंज बाउंड हो गया था लास्ट में. दैट्स व्हाई इट्स अ मिनिमाइज पर. जब देयर इज अ मोमेंटम स्टॉक, if the market is momentum like previous day, this is the previous day market, you see that buy sale, there is a huge time you can get 20-30 point in a single trade. So always if market cushion is very less, कितना भी कम हो तब भी 20 पॉइंट मिल जाएंगे. दैट्स वाई आई नीड की मिनिमम 20 पॉइंट लेने हैं. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 30 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट. ओके, तो व्हेन यू यूज दिस टूल in bank nifty, you go for the minimized profit. Okay, and if you go for कि भाई मैं एक बारी में एक ट्रेड लूंगा या इसमें से कोई एक ट्रेड ले लूंगा, दिस इज नॉट अ गेम ऑफ स्कैल्पिंग. आप मत करिए वो चीज़, वो आपके लिए नहीं. Single day, you start from 9:15 to 3:30, take all the trade with give by the software, and taking all trade profit minimum 20 or 30 and SL also 20-30, you definitely win. Some people who use option trading, this tool also helpful in call chart and put chart. उसमें भी लगा सकते हैं. ठीक है, when you go for at the money option like bank nifty option or nifty option, so you can also use this scalping strategy for the premium. But ध्यान रहे, when you go for 20 point in bank nifty future, it means 10 point in option, call option और put option. तो उस हिसाब से ही आपको मोमेंटम देखना होगा. तो कितने पॉइंट में आपके खर्चा आ जाता है, व्हाट इज योर ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, व्हाट इज योर टैक्स एक्सपेंसेस, it depend upon the scalping, because every scalper account very minimum brokerage and very minimum tax. Let's suppose in 20.5 point is at your tax and brokerage, it means you get 15 point to make a profit. Okay, तो 20 पॉइंट में से 5 पॉइंट तो खर्चे ही निकाल दो जो आपको कवर करने हैं, फिर 15 पॉइंट आप बचाओगे. और उसमें भी आपके 30 में से 10 ट्रेड खराब होते हैं या 5 ट्रेड खराब होते हैं, 25 ट्रेड सक्सीज होते हैं, तो 20 ट्रेड बचे, 10 के तो लॉस चले गए. फिर 20 ट्रेड में 15 पॉइंट आपने निकाले, तो मोटा मोटा आपने 750 पॉइंट निकाल लिए. फिर वो लॉट से मल्टीप्लाई करिए, दैट्स कॉल्ड ए स्कैल्पर प्रॉफिट. ये एक अच्छा प्रॉफिट निकल कर आता है एंड द एंड ऑफ द डे.
बट आपकी स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल होनी चाहिए और थोड़ा बाजार का मोमेंटम देखें। जैसे मैंने दिखाया, लास्ट डे मोमेंटम इज वेरी हाई, इट्स गॉन अप ट्रेंड एंड इट गिव यू द गुड रिजल्ट। टुडे इज मोमेंटम इज लो, इट्स साइडवेज जोन, एंड फिर उसके छोटे छोटे ट्रेड हो गए। हालांकि 20 पॉइंट फिर भी दे देगा ये, ठीक है। 20 पॉइंट मूवमेंट इज इजी फॉर बैंक निफ्टी, एंड 12 to 15 point easily you can take from the scalping 3 minute chart in Nifty. When you trade in Nifty 10 से 12-15 पॉइंट ले लीजिए, बैंक निफ्टी में करें 20 पॉइंट ले लीजिए। जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये How much टूल is था। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। how much in Nifty, sir? 12 to Target. 15 पॉइंट, 12 to 15 पॉइंट इन 3 मिनट चार्ट। Okay, sir. Sir, even stop loss should be 20 points when target is When 20. I'm talking about the target 20, then stop loss also 20. Target 15, the stop loss also Okay. 15. 1:1. Okay, one Yeah, is to one one. is to शिवा, आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो बताओ। शिवा। सर क्या नाम है इसका, स्कैल्प प्रो? स्केल प्रो। इसके अंदर से कोई चेंज वगैरह तो नहीं करना, मतलब इस साइड में प्लॉट वगैरह लिखा आ रहा है नहीं जो ये। नहीं, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। और सर मतलब ये सेल का साथ ही साथ दे देगा इंडिकेट, मतलब कि भी मतलब कि उससे पहले ही दे देगा, मतलब जब ये इंडिकेटर देगा जब ही हमें ट्रेड लेना है? हाँ, ये क्लोजिंग कर देगा, जैसे मैं आपको इंटरनेशनल में दिखा देता हूँ। जैसे अभी देखो, ये गोल्ड ने बाय दी थी एट दिस सेकंड कैंडल, ओके, एंड द सेकंड कैंडल क्लोज इज 3396.40। अभी 3397 चल रहा है, तो मतलब प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड। तो क्लोज देने के, कैंडल जो क्लोज होगी उसी के पर आपको ट्रेड ले लेना है। अब $1 आ चुका है यहाँ से। Sir, ओके one doubt, sir. One doubt, sir. Actually, when you get a buy signal, we will buy, and you're telling us to keep target of 20. But at the target of 20, if sell signal has not come, also we should sell it, sir. 20 आपको पहले से वो करना होगा। यू शुड बी प्लॉट इन द ट्रेड बिफोर Okay. एंटर। एज यू एंटर इनटू द ट्रेड यू प्लॉट योर टारगेट। So even sell target is not given, also we should confine हाँ, to क्योंकि 20 points. स्कैल्पिंग में आप मैनुअली नहीं काट सकते, मैनुअली काटोगे फंस जाओ। Okay, sir. When sell signal comes means we should short it and keep 20 points target. You mean to say that, sir? व्हाट? When buy signal comes, we should put 20 points manually, even sell signal has not come, is not given. राइट। And even if sell signal gives, we should short and put 20 points. That's it. We should take a buy and sell signal different thing, isn't it, sir? No, always if you go for the buy, then 20 point plus, and then go for sale, 20 point minus. So whenever sell signal comes, we should put 20 points down. Right. Okay, sir. We can take as in when we can take only buy signals, or we can take only sell signals also. You can take any signal. If you go for buy, then you buy signal, you go for sale, sale signal. Take all Okay, sir. signals from the tool, because of that scalper need to Okay. take all the trade। रुद्रांश Okay. बताइए। सर वो जो पिछला वाला आपने इंडिकेटर बताया था, लिक्विडिटी स्विंग वाला, वो लिक्विडिटी स्विंग वाला लक्स, उसका लक्स एल्गो का, मतलब वो हाँ। मैंने यूज किया था सर, उसकी एक्यूरेसी मतलब अच्छी लगी, मतलब 70 to 80% है उसकी एक्यूरेसी। हम्म। गुड है। Now I give you a different indicator, and it's very important indicator। इसके बाद जो बता रहा हूँ, इसमें तो कुछ नहीं पूछना है। तुम बोल।
Sumbul, if you ask anything related to scalping. Yes, I need to know whether I should buy and sell simultaneously within a 5 minutes in this model, Yeah, कर and सकते. Hmm. buy at what I time, preferred you when go I for will go three. for buy. You buy when it's close the candle, and just like that, it giving in the chart the buy In the signal. upward trend, I No, should go no, for no, buy. no, no need to No? check the trend. When it give Okay. the sell signal, you go for sell. If it give the buy signal, you go for buy. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको कोई ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है. Okay. Okay? तो ये जो सिग्नल है वो किस उससे, ये जो नीचे ग्राफ बन रहा है, ये इट्स अ साइन ऑफ लाइक. ये देखो नीचे जो आ रही हैं, दो लाइनें आ रही हैं येलो और ग्रीन कलर की, वो क्रॉस ओवर से बन रहा है सिग्नल. ओके. तो उनके क्रॉस ओवर से सिग्नल आ रहा है, मूविंग एवरेज टाइप का. सर मतलब जब ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम हमें कितना टाइम बैठना होगा इस पे? ज़्यादा बैठना ही नहीं होता. अभी भी आपने देखा ट्रेड आया 5 मिनट, 3 मिनट का है, तो अगली दो कैंडलों में प्रॉफिट आ जाएगा. ओके हम्म. मतलब ये जो ग्रीन सिग्नल्स हैं इन पे हमें बाय करना है, और जो रेड वाले हैं उन पे सेल करना है हाँ जी, उस समय के टाइमिंग पे. उसके अकॉर्डिंग. हाँ. इसमें हमें कुछ मूवमेंट को इतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ नहीं इसी. नहीं, स्कैल्पर को कोई मूवमेंट नहीं देखनी, ना दिमाग लगाना कि बाय जाएगा सेल जाएगा. ओके. जिस डायरेक्शन में जाएगा उसको अपने आप ट्रेड दे देगा वो. अब जो इंडिकेटर बता रहा हूँ दैट्स कॉल्ड वी एक वैप. चीज और, क्या ये सिर्फ इंडाइसेस में ही यूज होगा या नहीं, स्टॉक्स में भी? और मेजर मेजर स्टॉक्स जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स है उसमें यूज कर सकते. ओके. VWAP is stand for the volume weighted average price. You use this indicator, volume weighted average price. Full form is volume weighted average price, and short form VWAP. I put on this indicator. What is exactly the meaning of VWAP? Firstly, you understand. VWAP means जो volume है, that the volume and price average is called weighted average volume price. So means volume का भी average, there is also price का भी average. When I am using moving average, it's only the price average. Okay. When I am using VWAP, it means the price on the basis of volume average, what exactly the level. तो इस इंडिकेटर में, in this indicator, when you use VWAP, there is a certain line that's called, let's suppose we talk about Bank Nifty, there is a certain line of today chart, the color is blue. See this is the today chart, and there is a certain line, color is blue. That blue line is a weighted average volume price. Okay, this is not only the moving average, because moving average giving you only the weighted average price, but it's also along with volume. तो that's why ये weighted average moving average है. तो जो ब्लू लाइन है ये बताता है कि प्राइस जो है इसके आसपास घूमता है. प्राइस सर्कुलेट बियॉन्ड अप एंड डाउन ओवर दिस. ये रोज का नया आपको ये लाइन दिखेगा. देखो ये आज का है, प्रीवियस डे का देखो वो रहा, ये प्रीवियस का है. ओके. और इसके साथ साथ देर इज अ टू बैंड, वन इज अपर वन इज लोअर बैंड, लाइक अ बलिंगर बैंड, ग्रीन कलर से आपको दिख रहे होंगे. दैट्स कॉल्ड जोन. वैसे नॉर्मली वीवैप में कोई बैंड की जरूरत है नहीं, but band give you the exact trade signal. Let's suppose I recognize the trade when price goes beyond VWAP, it means there is a selling pressure. Understand my point? When मतलब जब प्राइस VWAP के नीचे आएगा इसका मतलब सेल प्रेशर है.
When price goes above VWAP, it means buying pressure. ओके, इतना तो क्लियर हो रहा है सबको? तो 3 मिनट चार्ट, सबसे पहली बात इसको छोटे चार्ट पे यूज करना. 1 मिनट and 3 minutes इज बेस्ट फॉर द VWAP. Second thing, when you use VWAP, it means you find out the direction of the market. If market below the VWAP, it means selling pressure. If market above the VWAP, it means buying pressure. Understand? Okay. Mr. Reddy, are you understand? Yes, sir. One thing I don't understand, how to create this band in VWAP indicator, sir. Usually, when we apply, only one line will be seen in that. This is Usually, a special, so I use the band. That's why I show you in trading view. okay, sir. In trading view, it will be like this only by default. Yeah, and this is the my strategy on VWAP. If you using the band, then this strategy is fruitful. Okay, sir. Okay. Okay. So when we use VWAP, firstly we find out the direction of the market. The direction of the market is based on the VWAP. If Oh, market above the VWAP, it means there is some demand into the market. If market below the VWAP, it means there is a supply into the market. It is understand? But this sir, when do doesn't we take the mean trade, sir? I will give you यार, वेट करो यार, बड़ी जल्दी पड़ी है, Okay, बता okay. रहा हूँ. So when I'm talking about मेहंदी रत्ता जी, कुछ बोल नहीं रहे हो आप? सुन रहा हूँ सर, मैं आपकी बात सारी. हैं? आपकी कोई क्वेरी नहीं है? नहीं, मेरे को समझ में आ गया सर. अभी ये वीआईपी चल रहा है, मुझे थोड़ा हो रहा है. अच्छा, क्लियरिटी आ जाएगी स्कैल्पिंग तो वाली पूरा बात तो समझ तुम्हें आएगा. जल्दी समझ में आ गई होगी. हाँ, वो तो सर आ गई समझ में. अच्छा. So I mark the area which give you the direction of the market. Okay, sir. If price fall below the VWAP, it means there is a selling pressure, but it doesn't mean कि प्राइस को हम सेल कर दें. For selling, we need to wait price goes below lower band. Understand? Mr. Reddy, if price Yes, goes sir. below the lower band, then you go for sale. Okay, sir. And if price come again, you exit. Against the lower band. Lower band. Okay. Okay, sir. See the buy trade in previous day. If price goes above upper band, go for buy. Okay, sir. And when it come again, you exit. So, okay, sir. Understand? Okay, sir. When we use Simple this है. indicator in trading view, we don't have to change any coordinates or anything, sir. Yeah. When we apply, the indicator will be appearing like this only in the chart. It's If it is very in simple trading. indicator, very simple. Firstly, it useful for the direction and the demand supply of the market. If you Okay, see the market in a uptrend or downtrend today, then you go for VWAP and check that price below the VWAP and up the VWAP. You find out the direction of the market first. okay, Second, if you want to go for the trade, then you go for the band. Below band, lower band, sell signal. Below above upper band is a buy signal. okay, sir. पर वो मिडिल बैंड Okay. का क्या है? मिडिल बैंड का सिर्फ यही यूज है कि उससे डायरेक्शन पता चल रहा है. अच्छा, उसके ऊपर है तो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड. सोम्बुल, कोई क्वेरी है तो बताओ. 3 और 1 मिनट में यूज करना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए नहीं है ये. हर रोज का नया वीवर बनेगा. Yeah, it's okay. I understand. रुद्रांश, यस सर, आगे समझ में. मेहंदी रत्ता का तो आ ही गया होगा. और शिवा, सर नो प्रॉब्लम सर. क्लियर? Clear. Okay. You use this indicator in
बैंक निफ्टी, निफ्टी निफ्टी में भी अच्छा यूज कर सकते हो। तो ये लाइन जैसे ब्रेक होगा तभी नीचे का लाइन ब्रेक होगा तभी एंट्री करना है, कुछ वेट करना है? नहीं, जैसे ब्रेक होगा, क्लोज होगा, एंटर कर दो। if you if price close below the band, go for sale. Sir, I applied Weave app on TradingView, sir. Only it is not showing like a band like you said, See, sir. we were only this indicator volume weighted average के नाम से है। Okay, sir. Okay, sir. Weave app. Yes, only ओके, that is only. if you want to make VWAP as a special indicator, then you also use to exit plan and some point of a profit, then you can make is profitable more। जैसे निफ्टी में 3 मिनट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर मेरे को 20-30 पॉइंट में मिल जाए तो बहुत है। तो व्हेन इट्स गोज बियॉन्ड द लाइन, उसके बाद से 30 पॉइंट उठा लो, फिर नीचे आया फिर 30 पॉइंट उठा लो, इस तरीके से। बट क्लोजिंग की जरूर वेट करना। इफ कैंडल इज नॉट क्लोज, इट कैन ऑल्सो बी अ अपर और लोअर बैंड टेकिंग अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे आप देखो, कैंडल क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ शेडो बाहर गया था और फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ऐसा भी होता है। तो आई नीड कि ये कैंडल क्लोज करे इस तरीके से। ओके, Sir, स्टॉक्स we में भी should यूज use कर only सकते 3 हो। minutes. व्हाट? We should क्या use कह रहे हो? only 3 minutes. 3 मिनट में आवाज ही आ रही है। यूज करना सर। 3 मिनट में चार्ट में यूज करना पड़ेगा। 3 मिनट, हाँ। स्टॉक में भी यूज कर सकते हो, अच्छा मोमेंटम और ट्रेड देता है। एक तो डायरेक्शन इज क्लियर एंड द मोमेंटम इज क्लियर, आउटसाइड द बैंड इट गिविंग यू मोर प्रॉफिट। Okay, sir. So these both are the intraday indicators, mostly useful for scalping। If you want to go for momentum stocks, तो आप इसमें लगाइए, इसको यूज करिए, आपको मुनाफा अच्छा मिलेगा। Only this can be useful only in 3 minutes charts, sir, for scalping. दैट्स वाई जितना छोटे चार्ट पे लगाओगे उतना बढ़िया है। Yes, sir. मेहंदी दत्ता जी, कुछ पूछना है? नहीं सर सर, हैं? नहीं नहीं। सर मैं तो यूं कह रहा था कि भी जो जो दोनों आपने इंडिकेटर बताए हैं ये, इसमें 5 मिनट्स में यूज कर सकते हैं इसको या 3 मिनट में बेस्ट रहेगा? 3 मिनट में, 5 मिनट में इतना खास नहीं करेगा। ये एक स्टॉक है IFCI, देखो आज कितना बढ़िया गिरा है ये। 61 था, अब 60 आ गया, है ना मेहंदी दत्ता जी? बटर चिकन का क्या होगा सर? है? बटर चिकन का क्या होगा? भविष्य में क्या होगा? नहीं, क्या उम्मीद है इसमें आगे वो? आगे पंडित थोड़ी ना जो भविष्य बताऊंगा। Sir, how to तो shortlist देखो, the देखो यहाँ stocks पे or अच्छा, in? ये अच्छा बाय का ट्रेड था, ये अच्छा सेल का ट्रेड है। अभी फिर एक बाय का ट्रेड कल आएगा इस, हम्म, ठीक है? तो वो मोमेंटम आपका एक ट्रेड आ जाएगा 60 रुपए से, 61 रुपए का भी, 62 का भी, एक 1.5 रुपए का ट्रेड है, बहुत होता है। कितने का लॉट है इसका? कितनी क्वांटिटी का लॉट है? पता ही नहीं है मैंने तो।
मैंने तो चलो। सर फुल में लिया था ये। अच्छा अच्छा, पुट में लिया है, स्टॉक तो स्पॉट नहीं, फुल फुल स्टॉक में कैश में लिया था इसको। स्पॉट में लिया। अच्छा हाँ, कितने में? नहीं, लॉट क्वांटिटी। अच्छा चेक। चलिए इनको लगा के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा व्हाट एग्जैक्टली द रिजल्ट। मिस्टर रेड्डी, यू कैन यूज दिस टूल आल्सो इन इंट्राडे ट्रेड, या कैन गिव मी द कंक्लूजन की Okay. कैसे रहे। Sir, another doubt, sir, small doubt. To हाँ बोलो। shortlist any stocks or anything to do scalping in this way, is there any screener we should use, sir, to shortlist stocks? Screener never give you the scalping, sir. No, no, no. For doing the scalping, any shortlisted stocks, Stocks. how You to go find for stock you go for trend line app. trend line app? Okay, sir. LYNE trend line app. There we can find momentum stocks, any momentum Yeah, stocks, you can beta find the stocks, momentum stocks and go for high scalp. beta stocks, high beta stocks we Yeah, can find also. yeah, high beta stock. Top gainer also working, and Sure. high volume stocks also working. Even in top search research also, they have given high beta stocks like that, so Yeah, we high can beta use stock that. also are momentum stocks. Okay. Okay, next class में Okay. मिलते हैं. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you.